Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are looking at the solution of chapter number 11, exercises. Our chapter 11 was comparison operators, where we saw equality, not equal, then greater than, less than, greater than or equal to, and less than or equal to operators. So if you haven't watched that video, first go and check out that video, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं क्या एंड हाउ डू दे वर्क. सो फिर ही आप कनेक्ट कर पाएंगे सॉल्यूशन से. अदरवाइज आप सॉल्यूशंस की ये वाली वीडियो भी कंटिन्यू कर सकते हैं. मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँगा. Okay, so let's begin with the first one. This and this are dash operators. कौन से operators हैं ये? तो अभी मैंने आपको बताया कि chapter का हमारा नाम था comparison operators. So ये equal, not equal, greater than and less than equal are comparison operator and it's saying correct. Thank you. Okay, so next up we have what is the comparison operator for is not equal to. So is not equal to is this not and this single भी हो सकता है, double भी हो सकता है. So let's check and it's saying correct. Okay. Next up we have what is the comparison operator for is greater than. So greater than is this, very simple, and it's saying correct. Number 4, we have what is the comparison operator for is less than or equal to. Less than or equal to is this operator and it's saying correct. Now drag and drop. Drag the pieces to create this if statement. If A isn't equal to B, A is assigned to the value of C. If A is not equal to B. So first of all, if, then start of parenthesis, A isn't equal to B. So not equal to B, close the parenthesis, start curly brace, and on the next line we should assign A. A is assigned to the value of C. So C assign A. यहाँ कह रहे हैं ना A is assigned the value of C. So पता नहीं क्या कह रहे हैं कि A में C डाल दो या C में A डाल दो, I don't know. But ये चेक कर लेते हैं. A is assigned the value of C. So A C इस तरह. I think it should be this way. चेक कर लेते हैं. A assign C. It's loading, and A assign C is the correct answer. So we got it right. झूठ मत बोलिएगा, अगर गलत किया है तो उसको सही करके फिर से चेक कीजिएगा और फिर I got it right कीजिएगा. अच्छा जी, ऑटो कंप्लीट है. कोड द फर्स्ट लाइन ऑफ एन इफ स्टेटमेंट दैट टेस्ट्स वेदर num1 इज ग्रेटर देन num2. num1 ग्रेटर है num2 से. इफ स्टेटमेंट लिखिए इसके लिए चेक करने के लिए. सो इफ का I लिखा मैंने, parenthesis start, then num1 is greater than num2, in parenthesis को close किया, curly brace को start किया, and it was the first line that we got completed and is saying well done. Number 7, fail-safe coding है. Code the first line of an if statement that tests whether num1 is greater than or equal to num2. Exactly same है, बस इक्वल टू इसमें ऐड हो गया. तो हमने एक इफ स्टेटमेंट लिखनी है जिसके अंदर हमने चेक करना है कि num1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू है या नहीं है. इफ स्पेस पैरेंथेसिस num1 स्पेस ग्रेटर देन और इक्वल टू num2 parenthesis close space curly brace and it's saying well done. Okay, so next up we have number 8, that is code the first line of an if statement that tests whether one variable is unequal to another. So if खुद से बना सकते हैं हम.
variable names. So let's say num1 and excuse me, not equal to num2, parenthesis close, curly braces start. Check your answer and it's saying correct. Okay, Ji. Code the first line of an if statement that tests whether a variable has a different value from a particular string. ओके सो वेरिएबल को टेस्ट करना है नॉट इक्वल टू डिफरेंट वैल्यू मतलब नॉट इक्वल टू पर्टिकुलर स्ट्रिंग सो हम चेक कर लेते हैं इफ लेट्स से वेरिएबल इज नेम नॉट इक्वल टू लेट्स से अली सही है कुछ भी लिख सकते हैं आप और स्पेस देके ये कर लें और चेक योर आंसर करें सो इफ जेंडर दैट टेस्ट वेदर अच्छा एक काम मैंने किया कि कर्ली ब्रेसेस को सिंगल कोट्स में लिखा है बाकी तो हमारा और इनका कोड एग्जैक्टली सेम है चलें नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं वापस आके इसको दोबारा से कर लेंगे इट्स हाँ इट गॉट रेड कोड द फर्स्ट लाइन ऑफ एन इफ स्टेटमेंट दैट टेस्ट्स वेदर अ वेरिएबल इज लेस देन अ पर्टिकुलर नंबर ओके सो इफ variable so num1 is less than let's say 10 close the parenthesis start curly braces and check your answer and it's saying correct okay number 11 quote the first line of an if statement that tests whether the value represented by a variable is greater than or equal to the value represented by another variable एक if statement लिखनी है जिसके अंदर एक variable को check करना है कि वो greater than or equal to है दूसरे variable से if num1 आप कोई भी वेरिएबल नेम्स ले सकते हैं अपनी मर्जी के ग्रेटर देन और इक्वल टू लेट्स से num2 क्लोज पैरेंथेसिस स्टार्ट कर्ली ब्रेसेस चेक योर आंसर करेक्ट नंबर 12 quote the first line of an if statement that tests whether a string is unequal to the value represented by a particular variable ओके तो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है अनइक्वल यानी नॉट इक्वल करके किससे एक वेरिएबल से सो लेट्स से मैं लिखता हूँ अली और नॉट इक्वल टू लेट्स से नेम और स्पेस देके कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट चेक योर आंसर इट्स सेइंग करेक्ट इससे पहले जो हमारा नंबर 9 गलत हुआ है वो शायद डबल कोट्स की वजह से हुआ है हमने सिंगल कोट्स लगाए थे 25 सेकेंड्स के अंदर करना है quote the first line of an if statement that tests whether one variable is unequal to another unequal मतलब not equal तो not equal का operator use करना है हमने okay so let's start if space parenthesis start that tests whether one variable is unequal to so let's say num1 is not equal to num2 close parenthesis and start curly braces check your answer and it's saying correct 30 seconds के अंदर ये काम करना है हमने कोड द फर्स्ट लाइन ऑफ एन इफ स्टेटमेंट दैट टेस्ट्स वेदर अ वेरिएबल हैज़ अ डिफरेंट वैल्यू फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग वेरिएबल को कंपेयर करना है स्ट्रिंग से नॉट इक्वल के लिए ओके सो इफ नेम नॉट इक्वल टू लेट्स से डबल कोट्स के अंदर अली एंड parenthesis close curly braces start check your answer and well done 12 seconds में किया आपने Okay, for 15 we get 25 seconds. Quote the first line of an if statement that tests whether a variable is less than a particular number. Variable और एक particular number का comparison करना है less than operator से. So if num1 is less than let's say 25 और यहाँ पे लगा देते हैं curly brace और it's saying 10 seconds में ये काम आपने कर लिया well done. Now 25 seconds. Code the first line of an if statement that tests whether the value represented by a variable is greater than or equal to the value represented by another variable. ऐसे ही लंबी कह रहे हैं एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से कंपेयर करना है यूजिंग द कंपैरिजन ऑपरेटर दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सो इफ num1 is greater than or equal to num2 कोई भी नाम दे सकते हैं XYZ बट मीनिंगफुल नेम दिया करें डिस्क्रिप्टिव चेक योर आंसर एंड इज सेइंग करेक्ट इन 13 seconds. For number 17 we get 30 seconds. Quote the first line of an
if statement that tests whether a string is unequal to the variable to the value represented by a particular variable. string पहले है, compare करना है not equal ऑपरेटर को यूज करते हुए एक वेरिएबल से. सो if space parenthesis and पहले string that is Ali not equal to let's say name जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले किया भी था, parenthesis close curly braces start and it's saying done in 14 seconds. Well done. Now next up we have number 18 for which we got 45 seconds, and the problem is code and if statement test whether a variable is unequal to a particular number. If so, assign a number to that variable. Okay, test whether a variable is unequal to a particular number. Okay, so if num1 is not equal to 10 स्पेस ये और फिर स्पेस स्पेस और यहाँ से num1 असाइन लेट्स से 20, इसको बंद किया और curly braces. Check your answer and it's saying well done. I was not sure कि ये यही चाह रहे हैं because it wasn't clear, so that I just went for complete if statement. मुझे नहीं था पता कि ये कैसे लिखना है. Okay. For number 19, we have to live code the exercise, and for that, for point 1, we get code and if statement that tests whether a number is unequal to a particular to a different number. Code and if statement that tests whether a number is unequal to a different number. Okay, if दो numbers compare करने, if 4 is not equal to 5, very simple, space space क्या करना है, if the condition is true it will be, जो कि obviously होगी, display a congratulations alert. alert congo, कुछ भी लिख सकते हो आप. सही है, आप लिख लें मुबारक हो. ठीक हो गया, और इसको बंद कर लें, रन कर लें, तो आपके पास मुबारक हो आना चाहिए, जो कि आ चुका है. एंड नाउ यू कैन क्लिक आई गॉट इट राइट. अच्छा जी, for number 20 we get live coding exercise, and point 1 says code a prompt asking for your first name. Okay, so prompt your first name, आप कुछ भी लिख सकते हो string के अंदर, ज़रूरी नहीं है उन्होंने जो लिखा है वो आप लिखें. code and if statement that tests whether the name you entered is unequal to another name. वो ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले हमें इस नाम को किसी कंटेनर में रखना होगा. तो मैंने लिखा यूज़र नेम और उसके अंदर प्रॉम्प्ट से जो भी वैल्यू आ रही है वो डाल दी मैंने, कॉन्स्ट यूज़र नेम. और नीचे आके मैंने क्या किया, कोड एंड इफ स्टेटमेंट दैट टेस्ट्स वेदर द नेम यू एंटर्ड इज अनइक्वल टू अनदर नेम. इफ स्पेस user name not equal to let's say Ali, space space क्या करना है, if the condition is true it will be display an alert that says no match. so alert no match. ठीक हो गया, और यहाँ पे इसको कर लिया बंद. run it and it's saying your first name. I typed Ahmad and hit OK. It says no match, जो कि बेहतरीन चल रहा है. It was expected. Okay, so now we can click I got it right, and we are back on exercise number 9. Code the first line of an if statement that tests whether a variable has a different value from a particular string. Variable और string को compare करना है unequal यानी not equal operator का use करते हुए. different इन्होंने लिखा हुआ है ना, तो different mean not equal. so let's start with it. if space parenthesis start variable name, let's say unequal or different is not equal, and let's say Ali.
आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, स्पेस curly braces start, check your answer and it's saying correct. Okay, and we are done with all the problems of chapter number 11. So thank you so much guys for your time. That's it from this video. Inshallah मिलते हैं next video में. Till then, take care.